हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आज के लिए। मेरा नाम है सागर और आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो हिंदी सिनेमा जगत के बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं शिशिर शर्मा जी से, जिन्होंने राजी में काम किया, जिन्होंने उरी में काम किया है। बखूबी उन्होंने अपना किरदार निभाया है। और टीवीएफ रूममेट्स, जो कि मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट टीवी सीरीज है, उनमें भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा किया है। तो चलिए मिलते हैं आज शिशिर शर्मा जी से। और ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए मैं बस थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा साईफाई फॉर ए हेल्दी माइंड के बारे में। साईफाई फॉर ए हेल्दी माइंड वाज एन इनिशिएटिव, actually is an initiative that was started back in 2017, and mental health awareness is what our core belief is and what we do through various mediums. We organize open mics, events, workshops, and we prepare informative and educative materials, which are reference taken from World Health Organizations and NIMHANS as well. तो सर, अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है, और और मतलब सबसे पहला जो मेरा ये होगा सवाल, जैसे आपने शो शुरू किया था स्वाभिमान से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, एज अ केडी, एंड अभी हाल फिलहाल में आप आए थे बार्ड ऑफ ब्लड में, जी। राइट। तो अच्छा, ये मेरा दूसरा सवाल था। मेरा सबसे पहला सवाल ये था कि लॉकडाउन चल रहा है, राइट, एंड हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम इन द लॉकडाउन पीरियड, और आप ऐसा क्या क्रिएटिव कर रहे हैं या क्या नई स्किल्स आपने सीखी हैं जो आप लोगों को बताना चाहेंगे, ताकि वो अपना टाइम थोड़े अच्छे से स्पेंड कर सकें। यार बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक तो यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिज्ञासा का, जिन्होंने शी reached out to me, and it's really been a pleasure talking in the earlier program Loudspeaker with Siddharth. It was a lovely conversation. तो आपका जो पहला सवाल है, मैं लॉकडाउन में क्या क्या करता हूँ, शायद आपको ताज्जुब होगा या ताज्जुब लगेगा या यू विल बी सरप्राइज कि मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। मैं इन दिनों में, करीब 20 दिनों में, मैंने 4 शॉर्ट फिल्म्स शूट की हैं घर पे, क्या बात। अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ। और मेरी वाइफ ने मेरा बहुत ही सपोर्ट किया है, उन्होंने कैमरा हैंडल किया है, and the way she's handled the camera is unbelievable. I mean, कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो हाउसवाइफ बन के कैमरा वुमन क्यों नहीं बनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वो भी करता हूँ। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, तो प्लीज़ हमारे लिए कुछ पोएम्स रिकॉर्ड करके भेजिए। हम वो पोएम्स की जो शब्द हैं वो सुपर इम्पोज करके वीडियो बनाएंगे उसका। कुछ ऐसे वेबिनार्स हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो एक बहुत ही अच्छा वेबिनार हुआ था, हाउ टू परस्यू योर पैशन, दैट इज वन ऑफ द वेबिनार्स दैट आई अटेंडेड। और कुछ 50-55 लोग थे जो मुझे सुन रहे थे, और फिर सवाल जवाब हुए थे आखिर में। जी। मैं अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस, एक मिनट। Just a minute, please. कोई नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम। हाँ जी। तो सर। वो मेरी ग्रैंड डॉटर थी, उसके ऑनलाइन क्लासेस, असेसमेंट एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मेरे फोन पे आ गया, तो शी वांटेड इट ऑन गूगल। तो हाँ, अपार्ट फ्रॉम रेसिटेशन, अपार्ट फ्रॉम वेबिनार्स, मेरी एक नई सीरीज MX प्लेयर पे रिलीज हुई थी जिसका नाम था गर्लफ्रेंड चोर। तो उसमें कुछ इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं, और बॉन्डिंग बहुत हो रही है। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ काफी कुछ कर लेता हूँ।
एक हम आपने आपने क्या सीखा अपनी ग्रैंड डॉटर से? मेरे को ये जानना है, मेरी ये दिलचस्पी है जानने में। अ, खैर हम दोनों ने कुछ सीखा है कि एक दूसरे के साथ कैसे वक्त बिताया जाए, जी। किस हद तक वक्त बिताया जाए, क्या क्या करके वक्त बिताया जाए। तो और हम ये भी करते हैं कभी कभी, क्योंकि मैं एक चिल्ड्रन क्लासेस भी वर्चुअली ऑनलाइन पे करता हूँ जी, जी, जी। बिटवीन द एजेस ऑफ 5 to 10। तो शी तो पार्ट ऑफ दैट। तो हम उसके बारे में भी बात करते रहते हैं कि अगली क्लास में क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ क्लास करना काफी मुश्किल है। ये तो अ, है, बिल्कुल। आप जब उनको कुछ बताते हैं शायद वो इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं करते हैं। तो उनकी स्पीकिंग स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस, कैसे बोलना, किस हद तक बोलना, किस तरीके के अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और सबसे ज़रूरी बात तो ये आती है कि आप उनके कंफर्ट लेवल पर पहले पहुँचना जी, पड़ता है, जी। उनको समझने के लिए और उनको समझाने के लिए। अच्छा, मेरे साथ टेक्नो अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, मतलब जी, इतने सालों के बाद अब ये लॉकडाउन पीरियड में हम अपने टाइम आप मिला है आपको। वक्त बिता रहे हैं। जी, जी, जी। अच्छा, टेक्नोलॉजिकली कौन ज़्यादा एडवांस्ड है? मतलब आपने क्या-क्या नई चीज़ें टेक्नोलॉजी में सीखी उनके साथ रह के? किन के साथ? अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ? वो ज्यादा टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो शी इज वेरी वेरी कंफर्टेबल विद कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स एंड आईफोन्स एंड फोन्स एंड व्हाटएवर। हाँ, मैं थोड़ा चैलेंज्ड हूँ, लेकिन सीख रहा हूँ कैसे। मैंने हाल ही में ऐसा सीखा है कि एक्सटर्नल ड्राइव पे कंप्यूटर से कैसे डाउनलोड किया जाता है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे फिल्में की हैं जो मेरे कंप्यूटर पे हैं, विच जी। आई हैड टू सेंड एज वी ट्रांसफर। तो वो सब कैसे डाउनलोड करते हैं, तो अच्छा, हम वी ट्रांसफर आप सीख गए हैं सर, मेरे को भी सीखना है, मेरे को आता नहीं है। वी ट्रांसफर बहुत ही आसान है, और अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि बहुत आसान है। मैं आज सबसे पहले वी ट्रांसफर सीखूँगा। बहुत आसान है। आप गूगल पे जाइए, वी ट्रांसफर कीजिए, और वहाँ जो आपको फाइल्स अपलोड करनी है, अपलोड करके ईमेल आईडी डाल दीजिए और खत्म बात। दैट्स इट। जी, जी। आज आज मैं ज़रूर करके देखूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियोज़ माँगी थी और ड्राइव में तो मेरा ड्राइव फुल हो गया गूगल का। जी। तो वही मैं दूसरे सोर्स देख रहा था किस नहीं, और सोर्स से एक्सटर्नल ड्राइव पे कर दीजिए। आप जितने भी आपके वीडियोस हैं वो मुझे लगता है एक्सटर्नल ड्राइव पे आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, 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 जी। बिल्कुल सर, मैं ये बिल्कुल आज़माऊँगा। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है जैसे आप फ़िल्म इंडस्ट्री में आए, तो आई गेस सबसे पहला मेनस्ट्रीम शो शायद जो आपको मिला था, शायद वो स्वाभिमान था, मेरी जहाँ तक जी, समझ है। जी। और अभी हाल-फिलहाल में जो आपने सबसे बड़ा शो किया बार्ड ऑफ ब्लड जो इमरान हाशमी साहब थे उनके साथ, राइट? तो आपका जो ये सफ़र रहा है, राइट? बिफोर गेटिंग अ नोटेबल फेम एंड आफ्टर गेटिंग अ नोटेबल फेम कि आपको लोग जानने लग गए। हाउ इट हैज़ बीन एंड व्हाट वर द अप्स एंड डाउन्स दैट यू फेस्ड मेंटली? कि मतलब आपको लगा कि यार बिफोर द फेम एंड आफ्टर द फेम। जब हमने स्वाभिमान शुरू किया था तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि टेलीविजन क्या होता है, जी। क्योंकि वो मुझे लगता है कि शांति के बाद स्वाभिमान आया था। So we were not aware. There were a lot of actors, Manoj Bajpayee से लेके आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, रोहित, हर्ष, मैं, बहुत सारे एक्टर्स थे जो स्वाभिमान के स्टेबल से निकले थे। जी, जी, जी। और स्वाभिमान करने के बाद हमें ऐसा लगा कि, क्योंकि फिर उसके बाद सैटेलाइट टेलीविजन केम इनटू द पिक्चर। हुँ, हुँ। फिर एकता कपूर भी आई, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स आए, और मैंने एकता के साथ 2 शोज़ किए। एक था कन्यादान, उसके जी, जी। पहले था इतिहास। वो भी गोगी आनंद साहब ने डायरेक्ट किया था, जो स्वाभिमान डायरेक्ट कर रहे थे। एंड देन आई डिड कन्यादान विद किरण खेर एंड सुधांशु पांडे, हुसैन, जयति भाटिया, पूनम नरूला, गजेंद्र घाटगे। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो उस समय पहली बार शायद टेलीविजन पे काम कर रहे थे। हुँ। उसके बाद जब सैटेलाइट टेलीविजन का दौर शुरू हुआ, तब मैं बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि मुझे 2-2 3-3 शो मिल रहे थे करने के लिए। लेकिन एक ऐसा पीरियड आया मेरे लाइफ में
जहां मुझे 1 साल घर पे बैठना पड़ा। 4-4 शोज करने के बाद मुझे पता नहीं क्यों लोगों ने उतना वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि शिशिर शर्मा को क्यों नहीं ले रहे हैं लोग। मैं भी अपने आप से सवाल करने लगा। आई आस्क्ड माय वाइफ कि व्हाट इज द प्रॉब्लम? एम आई नॉट अ गुड एक्टर? इज दैट द रीजन, और एम आई too much on television for people to say okay now enough, let's give him a break? लेकिन वो 1 साल बहुत ही मतलब कठिन परिस्थितियों से गुजरा, and I didn't know how to cope with that. Fortunately for me, मेरा एक बिजनेस भी है। मैं पिताजी के साथ बिजनेस भी किया करता था, अभी भी वो बिजनेस जारी है, मैं करता हूँ। तो I had a second line to fall back on. I didn't really have to concentrate as to why I was not getting work. वो मेरे दिमाग में था, लेकिन वो पीछे था। I wanted to focus on what was there on hand. My business was on hand. तो वो थोड़ा सा डाइवर्शन हो गया मेरे लिए कि मेरा बिजनेस भी है, एक्टिंग भी है। 1 साल के बाद फिर से वो एक दौर आया जहां मैं 2-2, 3-3 शोज करने लगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो हेल्थ की वजह से, और टेलीविजन यू नो हाउ टैक्सिंग इट कैन बी। जब आप 2-2 या 3-3 शोज करते हैं तो एक शो में 4 घंटे बिताते हैं, फिर दूसरे शो में 3 घंटे बिताते हैं। सो ऐसे 12 घंटे बिताने के बाद आप घर जाते हैं, आपने क्या किया? एक शो के बजाय आपने 3 शोज किए, आपको सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं मिला? अगर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो फिर फायदा नहीं वो 3-3 शोज करने का। पैसे कमाने का वो एक जरिया था, और दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू डू टेलीविजन। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं अभी हाल ही में, जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, जिन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और मैंने मांगे भी नहीं। उन्होंने कह दिया था कि शिशिर साहब, वी डोंट हैव मनी। आई सेड ओके फाइन। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स दैट केम ऑन यूट्यूब वाज रोगन जोश विद नसीर साहब। उसमें हमें एक नया पैसा नहीं मिला, ना ही पेट्रोल के पैसे मिले, पर मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। And I don't see any reason why people should not do films which appeal to them. Monetary gain is not the only criteria. I think it is also the subject matter, the person who's doing it, who are the people involved in it, and if it appeals to you, then just go ahead and do it, because that chance will never come to you. You cannot regret the fact that you have not done something. तो मैंने टेलीविजन किया। टेलीविजन करने के बाद 2002 में मेरी पहली फिल्म थी सत्या, राम गोपाल वर्मा जी के साथ। जी जी जी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वो फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लोग मुझसे पूछते थे कि शिशिर, तुम्हें फिल्में ज्यादा करनी चाहिए। 1 मिनट, मेरी बैटरी थोड़ी डाउन हो रही, 1 मिनट में आया। जी 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 जी। जी। तो जब फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो लोग मुझसे कहने लगे कि शिशिर, आई थिंक यू शुड स्टार्ट वर्किंग इन फिल्म्स। लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आई मेरे पास जो मुझे लगा कि आनी चाहिए थी। फिर धीरे धीरे सरकार राज की रामू जी के साथ, उसके बाद ओम जय जगदीश की जो अनुपम खेर की पिक्टोरियल वेंचर थी, मजा आया उसमें करने का काम। बच्चन साहब के साथ बहुत मजा आया। अभिषेक था, ऐश्वर्या थी, गोविंद नामदेव, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे थे। फिर मैंने एक फिल्म की थी सुष्मिता के साथ, जिसका नाम था समय जी। एक सीन था, लेकिन मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करने का। बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर थी वो। और बच्चन साहब तो क्या कहने उनके बारे में। वो हम घड़ी देखते थे कि 8:30 हुए, बच्चन साहब नीचे सीढ़ियों से अपने गाड़ी में जा रहे हैं।
सेट के लिए, और हमें टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें घड़ी पहनने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि वी न्यू दैट ही वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर. ही इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एक्टर. फिर उसके बाद एक फिल्म आई थी मैरी कॉम. जी. मैरी कॉम के बाद मैंने सोचा हाँ थोड़ा सा यू नो द स्काईज विल ओपन फॉर मी, थोड़े लोग ऐसे कहेंगे कि आओ. फिर आई दंगल. जी. दंगल के बाद आई तलवार. तलवार. फिर तलवार के उरी और राजी में भी आपने रोल किया. राजी के बाद जो चीजें खुलने लगी, जी. वो मुझे लगता है मेरी जिंदगी में वो ऐसा एक पल आया जो मुझे बहुत खुशी दे रहा था, दी भी है. जी. एंड आई कंप्लीटली सल्यूट मेघना गुलजार साहब, मेघना जी for giving me this opportunity to actually work with her in 2 films. And then of course came Uri and then Bard of Blood. It's been a fantastic journey after Razi. Lots of work has come my way, and yes, I'm extremely happy for this phase of my life, which is probably the best phase professionally. अच्छा सर, मैं ना थोड़ा सा आपको एक फ्लैशबैक में ले जाता हूँ. मतलब मैंने अभी हाल फिलहाल में आपका एक छोटा सा रोल था, बट बहुत प्रोमिनेंट रोल था आपका, अ डे विथ आर.डी. शर्मा में. आप एच.सी. वर्मा साहब बने थे. तो कल मैं एक्चुअली ऐसी जिज्ञासा के साथ डिस्कस कर रहा था, तो जिज्ञासा ने एक्चुअली कोचिंग ली है आर.डी. शर्मा साहब से. तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, और वो सिर्फ मतलब वो इतना आपका प्रोमिनेंट रोल रहा है, चलिए भले ही कम टाइम के लिए रहा हो आपका, पर वो इतना ज्यादा प्रभावशाली रहा है. मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने एच.सी. वर्मा साहब का रोल किया. उसमें बोला यार मेरा बंदर भाग गया, मैं टेंशन निकाल रहा था. वो बहुत अच्छा लगा सर. और वो जो जुगलबंदी थी आर.डी. शर्मा और एच.सी. वर्मा, कोई भी एक इंजीनियर या 12th में जिसने साइंस ली हो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा. तो आपको आपका कैसा था वो एक्सपीरियंस एक? मैं गजराज साहब के साथ काफी काम कर चुका था. जी. और इनफैक्ट As a रूममेट्स में भी director, आपने किया था. he was a director when I worked with him. जी. तलवार में of course I never had any scenes with him, but ये एक opportunity थी which I did not want to lose. Small or big, it doesn't really matter to me. It's, as I said, it's the even if it is a silent role, it doesn't matter, because लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर आपके पास डायलॉग हो तो आपका रोल बहुत अच्छा हो जाता है. जी. 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 लेकिन साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. आप जितनी अपनी आंखों के साथ बात कर सकते हैं, हाथों के साथ बात कर सकते हैं, वो शायद शब्दों के साथ नहीं कर पाएंगे. तो गजराज जी के साथ मेरा पहला एक्टिंग मौका था, एंड आई डिडंट वांट टू लूज दैट. So I thoroughly enjoyed it because he's such a fabulous actor. I mean, I never knew that he was an actor. I always thought he was a director, क्योंकि उनकी जो कंपनी थी कोड रेड अभी भी है. मैंने उनके साथ 3-4 ऐसे एड्स किए, but I never worked with him as an actor. But when I saw him in तलवार, I thought he was absolutely fabulous in तलवार. और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे फिल्में की हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे वीडियोस किए हैं TVF के लिए. तो मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मैंने TVF के साथ काम किया था परमानेंट रूममेट्स में, एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद दैट प्रोडक्शन हाउस. चलिए सर, मेरा सेगमेंट यहाँ पे समाप्त होता है. बहुत मेरे पास तो सवालों का ढेर पड़ा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ, बट सिंस वी हैव अदर पीपल एज वेल जॉइनिंग इन, तो मैं आपसे यहाँ पे विदा लेना चाहूंगा. बहुत शुक्रिया सर. और मैं जरूर एक बार आपसे मिलना जरूर चाहूंगा, अगर मैं कभी उस ओर आपकी ओर रुख किया तो. जरूर जरूर. चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू. थैंक यू. हेलो सर. हाय. आई एम जिज्ञासा. नमस्कार जिज्ञासा, हाउ आर यू? आई एम गुड सर. कैसे हो आप? मैं तो ऐसे ही बहुत फैन फॉलोइंग वाली फीलिंग आ रही है मुझे. थैंक यू सो मच जिज्ञासा, थैंक यू सो मच. आपका एक मोनोलॉग था सर, एक टीवी सीरीज, ये वेब सीरीज का, जो मुझे एक्चुअली काफी मेरे क्लोज है, एंड मैं काफी कभी अगर मेरे को प्रॉब्लम होती है तो आई कीप गोइंग बैक टू दैट वीडियो. दैट इज आई थिंक एक प्रेग्नेंट होती है लड़की, एंड आप उनको समझाते हो, एंड यू आर अ डॉक्टर एक्चुअली,
and you counsel her very well, and that's one of my favorite monologues by you. So I keep going back to that. Yes, it is. It is very relevant to what is happening in today's world, Jigyasa, because life is a peak hour rush, as Right, was very clearly mentioned in and what I spoke. So I think we need to try and departmentalize what we actually want to do in life. We can't do everything at one time. We need to compartmentalize everything. We need to see where we can and how we can actually do the best in that particular compartment before we get on to the next one. right, right. It was very relevant to today's times, and it was part of a web series called "What's Your Status." Yes, So yes, it was just that one scene that I did, and it was a 10-minute scene. Yeah, it went viral quite a bit actually. yes, sir. It was really nice, and I keep going back, whenever I feel low or something like that. So that scene is quite effective, Yes, quite prominent actually. yes, yes. So, so, sir, my question would be, like, we all know that we all are in a lockdown scenario right now, and a lot of people, because of this lockdown, have been losing jobs, and there's an economic dip that we are experiencing. So, along with that, we have also seen that there's a mental health dip that people are experiencing. So, what would be your take on that? Yeah, it's very, Jigyasa, it's extremely difficult for people like us to comment on that because we are in a quite in a situation where we probably don't feel the pinch, but the pinch is felt in the lower middle class and the below poverty line class, the daily wage workers. They are suffering a lot, and one can really imagine how much they would be suffering because I know, especially in this film industry, we have a lot of daily wage workers who Right, rely on getting work every morning, taking back that money, and feeding their families and feeding themselves. Uh, but now, in a situation like this, I can very well understand the kind of strains that they're going through, the mental stress that they're going through with their families, and it is difficult to understand how they probably would be coping with this particular situation. We are also coping with it. We are also feeling the pinch, but it is more the middle class and the lower middle class and the below poverty line people that will actually feel the pinch to a great extent. And right, I can very well imagine why they want to go back to the states where they came from, the migrant workers, because there is no place to stay here. They are living in quarters where they're living with 10, 15 other people in one room. Social distancing is not happening. How do they go back? That is another major problem that they're facing probably. right, The families are there in their villages or wherever they stay. They are here. So, the connect is not happening. And this was the time when they wanted to be with the families. They want to be together, to be as one. So right, I guess the mental strain is quite a lot. right. I can really imagine. I'm all with them. I feel that it's going to be a long time before uh, people can come back to their sanity. And I can well imagine that it might just go beyond 3 4 months if this is the case, especially in a city like Mumbai or Delhi or the metropolitan cities that is facing the brunt of this COVID-19. Right, sir. So my another question would be, like there was the short film by Kajol, which went viral, uh, uh, it was on rape. Basically, they had opened a home for all the rape women together. Like Ah, they were all yes, staying together. yes. Right, so we can see right now, rape or violence has grown very, I've seen a, very spike hike right now. Like we can see that, during the times of lockdown, a lot of calls have been reported around domestic violence or abuse, sexual abuse. So do you think like houses like this or preventive measures like this
could help, or what is your view on the increasing violence that we are experiencing amid a lockdown, where more empathetic attitude or more empathetic society should be formed, and people should be coming together to help. We are seeing this kind of divide happening. See, I personally would feel that you have to be on the same page in the first place to try and create the awareness, not only amongst your society, but amongst your own family members. I Right. think that is very, very important. You start from home. Charity always begins at home. So when you start from home and when you understand each other, that is the time you need to go to the others and tell them that, listen, we are also sailing in the same boat. You are not any different. We need to come together as a cohesive unit and try and create that awareness amongst everybody. I know there are, because of the strain and because of the mental strain, there's no salaries coming in. A lot of people have been, probably withdrawal symptoms as far as drinking is concerned, Right. smoking is concerned of any kind. So there is that mental strain. What do you do? How do you get that mental strain out of your body? What do you do? You probably go into a physical abuse. You probably go into a sexual abuse, because it is quite difficult for people who've been addicted to this kind of, either the alcohol or the smoking, and it becomes difficult for them to come out of it. And we know when you try and leave a habit which has been there with you for many, many years, there are withdrawal symptoms of some Right. kind. And you know that very well. I mean, you are from the mental health. So I think it is necessary for people to try and see amongst themselves and then form a group, then form a society, and then go and try and help people who are actually undergoing this kind of a mental strain or mental health problems. Right. Without which, just talking in the air that, okay, we will do this and we will do that is not going to happen. I think it has to happen from your home, from within your society, then go to other people, try and build that society, try and build that, uh, get that confidence in the others that you can do something about it. Without which, it's not going to be possible. I mean, there are going to be rape cases, there is going to be sexual abuse, physical abuse, because of the withdrawal symptoms, because of the mental strain, because of no salaries coming in. Financially, they are completely down and out. Most of them, in fact, most of us, we've not been, we've not been working now for almost 2 months, and a lot of, a lot of strain on everybody. We Right. have, I mean, the resources are not unlimited. At some point of time, we need to also dig into our own then resources that probably we have probably saved in terms of investments and things like that. Right. And these people don't have the means to dig into their investments and things like that, because obviously they don't have any investments. Where will they get the investments from? They need to feed their family. They need to feed themselves. So where's the question? And it's not that they get 10,000 rupees a day. Right, sir. So they have to pay for their rent. They have to send the money to their families. They have to stay there and eat and feed whatever the family, the daughters, the children, the grandfather, parents, whoever is staying with them. So yes, I think it's very difficult. I mean, I haven't seen that film. I'd like to see it because there's a very, very close friend of mine who's worked in that film, Nina Kulkarni. Yes, sir. He was also there in that film, and I want to see that film. I heard it's a pretty nice, decent film to watch. Right, right. So that was my segment here on mental health. Now Prerna will be coming. She's the youngest of all and yet more directive. Like she's the one who directs us for all the roles and everything. So she'll be coming. Pleasure. So she'll be taking your interview. Thank you, sir. It was a great moment to Thank you spend so with much. you. Thank you. Hello, sir. Hi, Prerna. Hi. I am so I am the youngest member, and it's so nice. Thank you for sticking around for like such a long time. Not at all. आपने आपने बोला था कि वेडनेसडे की सुबह आपके लिए काफी अच्छी होती है, जी, एंड आई होप हम आपकी उस सुबह को थोड़ा और अच्छा बना पाए. Zarur. It's good to talk to people who are like-minded and come up with questions other than
what I've been doing and how Exactly. That is why we tried to formulate the whole questionnaire in such a manner that it is a different experience for you as well. And so you have such a calming presence. Like whenever we watch a movie or any series, as soon as you come on screen, it's a very calming presence that you give. I don't know, like when we watch movies like Talwar, which is so intense and it is something that is real, that is something so close to us. And as soon as you come on screen, there's a calming presence, which I guess it reflects from your whole character as such. And it's really nice. I am also having a fangirling moment right now, and I'm really nervous because now. I have never done anything like this. So this is my first time. So सर मेरा जो सेगमेंट है वो मीडिया के और मेंटल हेल्थ की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है. आप मीडिया इंडस्ट्री में सब ओवर 40 इयर्स से है एंड आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि मीडिया जो है टीवी सिनेमाज वेब सीरीज ये हम हमारी पॉपुलेशन के लिए स्पेशली इट हैज बिकम अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर इमोशंस थॉट्स पैटर्न्स एंड चाहे हम जितनी भी कोशिश कर ले उसको रियल लाइफ से डायसेक्ट करने के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए बट हमारी इंडियन पॉपुलेशन और इंडियन ऑडियंस जो है वो सेलिब्रिटीज को आइडलाइज करती है तो इसीलिए हमारे लिए वो उनके बिहेवियर्स और इमोशंस और जो हम टीवी पे देखते हैं उसको कैच करना बहुत इजी होता है. सो मीडिया हैज अभी तक काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है सेंसिटिव टॉपिक्स लाइक मेंटल हेल्थ को. बट आपको लगता है कि फ्यूचर में और अभी कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ऐसी चीजों को रिप्रेजेंटेशन एक बेटर और अप्रोप्रिएट मैनर में मिल पा रही है जिससे हम सब लोग उसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मुझे लगता है सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि I don't know whether there was a lack of initiative from the media's side, or there was a lack of initiative from the point of mental health that was lacking in bringing it out to the general public. But now, because of this lockdown, there's a lot being said about mental health. There's a lot being discussed about mental health. And I think the media is also discussing the mental health. May not be on television, but at least in the newspapers, there's a lot of articles that are being written about mental health, how people are coping with mental health, what they should do with the problems that they are facing. And I think that is the reason why people are talking about mental health, and it's a good sign. I think it should be spoken about a lot more than just because of the lockdown. Generally, there is a lot of anxiety as far as mental health is concerned, but nobody wants to talk about it. Maybe it's too personal that people don't want to talk about it. Maybe they will go to a counselor and talk about their own mental health problems. But in general, I think there should be some kind of discussion, some kind of panels that should come forth and talk about mental health. Not just because of the lockdown, but generally, I think there are a lot of problems that people are facing, but they don't want to say it in the open. They don't want to come out into the media and tell the media that, no, well, listen, I'm going through a problem, but I don't know how to solve it. They'd rather go to a counselor like Jigyasa and say, okay, Jigyasa, I have a problem. I need to sort this problem out. So I think it's also being a little shy of the fact that you don't want to bring out your own personal problems in the public platform. But as we have seen that several celebrities have come out about their issues and in a way that has helped people to actually be more accepting of that fact. And we get to relate with a celebrity figure, so we feel that okay, if they are having that issues, then we also feel like okay, we can also get through this. We get some kind of hope and optimism to look forward to. So of course, if we talk about it in a more larger sense, even if celebrities do come out slowly at their own pace, at their own skin, so it will be giving a relatability factor, I guess. Yes, definitely. I would completely agree with that. But it is left upon to the individual or to the celebrity to actually come out and talk about the mental health problems. That whether they are facing it or not, I don't know. But in general, give some kind of a hope, courage, confidence, whatever you may call it,
if I have a mental health problem, or if I'm going through a depression or a depressive state of mind, I need to talk about it to whomever, whether it's a counselor or whether it's your spouse or whoever it is. People do not talk. That's the problem. Nobody wants to discuss even their personal mental health problems, their personal problems. Nobody wants to talk. So if I have a problem, I should go and talk to my wife about it, and at least get that dialogue going. So until and unless I get that dialogue going, I'm not going to have confidence in telling the general public, okay, now because you have a mental health problem, let's try and solve it. How do you solve it? Go and talk to somebody. And that has always been the problem in this country. Nobody wants to go and talk to people. Nobody wants to go and discuss their own problems. There is no harm. I'm telling you, there is absolutely no harm in discussing the problems with your own spouses, with your own people at home. But please talk. Create that dialogue between somebody and somebody. You and somebody. Absolutely. And coming from a credible figure like yours, I guess there will be a positive change in this regard, that dialogue shall be initiative and people shall feel the need to feel vulnerable again, because in the Indian population, people find it very difficult to show their vulnerabilities in general. You know, I did a show which was called Let's Talk. Right. There were 6 of us who spoke one line. It came as, you know, Yes, I did saw that video. About how how children do Yes. not talk to their I parents. was about to come to that video because that was a very impactful video. Probably one of the best videos in today's times. If somebody goes to that video, he watches it, he's obviously going to think, or she's obviously going to think that, yes, I think this is time for us now to talk. Whatever the problem may be, doesn't really matter. You have a problem with your spouse, speak. You have a problem with your girlfriend, speak. You have a problem drinking, speak. Smoking, whatever the problem may be. Otherwise, you're going to get into a depressive state of mind. And once you get into that depressive state of mind, you know how difficult it is to get out of it. Absolutely. So, sir, thank you. And the next question is, it's actually not a question, it's an advice that we want as a youth of today. We have a lot of energy and drive and passion to do the things that we strive for. However, we always fear. And that fear does not usually come from something which we feel lacking in our ability or potential, but that fear comes from the fear of judgments and criticisms by the society. How do we try to avoid such criticism, avoid not, but take these judgments and criticisms in a positive manner? You have to. I mean, that is one aspect. I will wholeheartedly say that criticism is always welcome. It only gives the person hope and courage. It's for the betterment. There is nothing personal against that person when I criticize that person. I'm criticizing that person only because of his work. I only want him to get better in his work, whatever the work that he may be doing. He may be an actor, he may be a musician, he may be from any kind of field. If you are not there, you're going to be criticized. If you're not doing it rightly, you're going to be criticized. It is not judgmental that, once you criticize somebody, I'm not judging that person in any way. That's not the end of the road for that person. There's always scope. There's always light at the end of the tunnel. Yeah? You have to understand that if you do not pursue your passion, whether it be good, bad, ugly, wrong, whatever it is, but you have to attempt it. If you do not attempt it, how the hell are people going to criticize you? How the hell are people going to know whether you can actually do this or not do this? You know, when I started acting, people said, Shishir, no, yaar, I think forget it. It's okay. You dabbled with it. Now just leave it. No, if I had left it, I would have regretted the fact that I did not take the criticism very well. I took it very well. And here I am today. I was, I do a lot of online workshops, and I'm doing one virtual workshop with actors from Singapore. And I've told them the same thing last Sunday, that if you do not take criticism in your stride as an actor, you will never grow. You need to take it in your stride. There is no personal vendetta towards you as a person. It is only because Prerna has not done something right, I need to tell her. Now she has to take it
in a manner for her to better that. Not because Shishir Sharma is criticizing, so she'll say, "Oh, Shishir, please, enough. I don't want to hear that criticism, man. Enough." That's not the way. If you're going to do it that way, then there is no connect. How do you connect? You'll go up on stage and do the same thing, and I'm going to criticize you again, and somebody else will criticize you again. Then you'll come and think, "Oh, Shishir had actually criticized me for that. I should have taken his criticism then." I'm not being judgmental about it. I just want you to improve. And I think today's youth needs that. They need to improve. They need to be criticized, but not judgmental. Do not judge somebody just by an act which you think is wrong or bad or not according to your expectations. Give them a chance, but criticize them. Tell them that, no, I think you should do it this way. But I'm not judging you because you are Prerna. I'm judging you because you're Prerna, the actor. Absolutely. I guess there is no growth unless there is some kind of criticism, and we all need to be. There'll be good and bad and ugly criticisms. That's perfectly all right. People will say you're absolutely shit. But it doesn't really matter. They're not saying that Shishir Sharma is shit. They're saying the actor, the character that you portrayed was not to our expectations. It was not to mark. So try and better that. And that's how you're going to better it. Yes. Thank you so much, sir. I guess this is the words that we have to leave with the youth. And these are the parting words that you can say to the youth of today. And with these words, we all are sure to get inspired and motivated by you, because it's very important to live in a limitless way and take that leap of faith that you have always wanted to take. Absolutely. It is necessary to have confidence in yourself before you try and give a lecture to somebody else. You need to have that grace, you need to have the confidence, and that's the only time you can actually tell Prerna, okay, fine, you're looking damn good. I think you did a damn good job. But just telling somebody on their face, I don't think it's just superficial, and it doesn't augur well. Yes, sir. Thank you so much, sir. It was a really, really great session with you. On behalf of the whole team of Sci-Fi, we would like to extend our gratitude towards you. My mother and my father are also very excited for seeing this. They are very happy that we got this opportunity. And for someone who has just started in this field, positive appreciation from and opportunities like these do help us all to grow, and it gives us a positive stride to work even more harder. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, the three stooges. Thank you so much, sir. It was lovely talking to you. मैं तो जरूर आपसे एक बार आके मिलना चाहूँगा सर, मतलब मैं पर्सनली आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे काफी ज्यादा रेजोनेट कर सकता हूँ काफी चीजों को लेकर। जब भी आप बम्बई प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, हम जरूर मिलेंगे अगर वक्त ने हमसे साथ दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर। थैंक यू सो मच। Thanks so much.